देखिए, केस स्टडी मैं आपको दूँगा और सुबह मैंने क्या किया था 9 बजे व्हेन आई टूक द फर्स्ट स्लॉट, मैंने केस स्टडी आप लोगों को पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दी। लेकिन फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे इंडियन ऑयल में समबडी वाज़ शेयरिंग विद मी हैपेंड कि वहाँ पे वो उन्होंने डिक्टेट करी केस स्टडी, कागज़ नहीं दिया, ना ही स्क्रीन पर प्रेज़ेंट करी। आप लोगों को जो डिक्टेट करी उससे ही नोट करना था। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब देने थे। तो वी विल डू दिस एक्सरसाइज़ टुडे लाइक दैट ओनली। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट नोट्स में हम किसी और तरीके से एक्सरसाइज़ करेंगे। मैं अभी आपको केस स्टडी प्रेज़ेंट करूँगा। ठीक है? मैं 3 मिनट का टाइम लेके उस केस स्टडी को मैं बोलूँगा भी। आपको उसको देखना भी है स्क्रीन पर और सुन के अपने नोट्स भी बनाने हैं। जो 3 या 4 क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं, ये भी आपको नोट करने हैं। फिर मैं आप लोगों को 8 मिनट्स का टाइम दूँगा, 7 टू 8 मिनट्स का टेंटेटिव टाइम दूँगा। आप उस केस स्टडी को एनालाइज़ करना और उसके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके आप सॉल्यूशंस नोट करना, जो भी आपको लगता है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। After that, after that, I will open the floor for 15 minutes discussion. Sharp 15 minutes discussion, I will open the floor. After 15 minutes, I will give you 3 more minutes for a conclusion. ठीक है? तो टोटल 18 मिनट्स मैं आपको दूँगा। उस 18 मिनट्स के बाद आई विल नोट डाउन ईच वन ऑफ योर पॉइंट्स, सबके मैं पॉइंट्स नोट करूँगा। आई विल गिव माय फीडबैक टू ऑल ऑफ यू और आप लोगों के आउट ऑफ 10 मार्क्स में, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था, कि मैं ग्रुप पर या आप सभी के सामने आपके मार्क्स नहीं दूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आपके 10 में से 10 नंबर आ जाए तो आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ। एंड इवन आई डोंट वांट यू टू बी लेस कॉन्फिडेंट कि मैं अगर यहाँ पे शो कर दूँ कि सौरव अग्रवाल के यार मेरी राय में 2 नंबर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आई डोंट वांट यू टू बी लेस कॉन्फिडेंट आल्सो, बिकॉज़ अल्टीमेटली ड्यूरिंग द लास्ट 5-6 days it is 90% about your own confidence only. Individually I will send you your marks. ठीक है? और इंडिविजुअली आई विल अटेंड योर कॉल्स ऑल्सो। किसी को कोई डाउट होगा हम बाद में सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसकी हमने आज बाउंड्री बना ली कि व्हाट आर वी नाउ गोइंग टू डू। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू माय केस स्टडी। ये केस स्टडी स्पेशली मैंने ड्राफ्ट करी है, कहीं और ऐसी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि खुद ही बनाई हुई है। प्लीज़ आप इसको सुनिएगा और इसके आप नोट्स बनाइएगा। इसको मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूँगा, मैं बस डिक्टेट करूँगा इसको स्क्रीन पे दिखा के। आई होप माय वॉइस इज़ वेरी मच क्लियर। ठीक है। सो द केस स्टडी नेम इज लेबर रिलेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है? किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यही चलता है, लेबर के साथ रिलेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। द केस स्टडी सेज your group is assigned the task of addressing recent inefficiencies in ABC factory operations and strained labor relations. The factory has experienced an increase in production delays and absenteeism among workers. The management had kept new talented middle managers to boost company's production 3 months before, but it seems that the workers and the new managers are not having cordial relations. Management believes that a lack of communication, unclear project targets, and dissatisfaction with working condition are major contributors of unrest among labor. The profitability of ABC factory has gone down by 15% in last 3 months, and some of its employees have been poached by its competitors as well. Keeping in view that ABC factory is expecting a good government contract worth 50 crores, the factory needs to streamline its operations. मैंने एक बार ये पढ़ दिया, एक बार मैं दोबारा आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, दोबारा इसको समझिएगा। For the sake of repetition, I am repeating it. Your group is assigned the task of addressing recent inefficiency in ABC factory operations and strained labor relations. The factory has experienced an increase in production delays and absenteeism among workers. The management had kept new talented middle managers
to boost company's production 3 months before. But it seems that the workers and the new managers are not having cordial relations. Management believes that a lack of communication, unclear production targets, and dissatisfaction with working conditions are major contributors. A profitability of ABC factory has also gone down by 15% in the last 3 months, and some of its employees have been poached by its competitors as well. Keeping in view that ABC factory is expecting a good government contract worth 50 crores, the factory needs to streamline its operations. ठीक है, ये दो बार मैंने इसको रिपीट कर दिया. अब क्वेश्चंस पे आते हैं. ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को. Kindly provide solution on below points. First question, advise 4 steps that can be taken by the company to streamline the functions. Second question, what should be your approach regarding the new middle managers that have been hired? Third, what can the company do to stop their employees leaving their organization and joining the other competitors? I am repeating the questions again. First, advise 4 steps that can be taken by the company to streamline the functions. What should be your approach regarding the new middle managers that have been hired? What can the company do to stop their employees leaving their organization and joining the competitors? Last में there is a statement, once the discussion is complete, provide a solution that includes specific action to be taken. Who will be responsible and a timeline for implementation? I am zooming on the questions again for 1 more minute. Yeah, so now it's 21:10 in my phone. I am giving you 8 to 10 minutes. At 21:20, I will open the floor for discussion for next 15 minutes. Okay, I am stopping it as presentation. आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, 8 से 10 मिनट अपने पॉइंट्स नोट करने के. प्लीज, थैंक यू.
4 more minutes, कलेक्ट एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, है ना? फिर बाद में आपको ऐसे ना लगे कि यार आई एम शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स। डायमेंशंस कवर कीजिए, मैक्सिमम जितने डायमेंशंस कवर कर सकते हैं।
2 more minutes. 2 more minutes. Last minute. Okay, I'm opening the floor for discussion. Now you may please start the discussion. I'm giving 15 minutes. Thank you. So good Hello evening, friends, everyone. my name is Ajay Madhesian, and here we have a task that should be in this task a newly hired manager that is appointed before 3 months, and there is a efficiency decrease in the power plant uh, in that of SAP, yeah, in that company, and there is a loss of 15%. So here we advise how to increase the efficiency and what the fraction that cause the degradation of the production. So my advice will be, first advice will be they should have a clear communication with their employee so that there is no any cause of the clear communication, any cause to the communication. For this clear communication, he should take advice from their local community because he has had 3 months before and some technical instrument he can use for that. And my second advice will be in their efficiency regarding the decrease in efficiency, who has no any clear deadline to complete the project. So firstly, we should make a clear deadline to complete the project because if we have no any deadline, then every employee has not that kind of motivation to complete that. And my third advice will be to deal with the workers. Till they we should tell them that the project in a very small steps so that the worker can easily understood what the project is. If we deliver all the information directly in single lines, that is very difficult for them. So we should write the information, production line information, so that a worker can easily adapt what they are doing and what is they are capable for doing. And I want my first advice will be yes,
I want to add some more point here. We can also organize team activities, cultural fest and team bonding, and also we can include team sports to to make the to make the environment friendly, and so that the workers can be indulged in various game, and they can learn team spirits. And इफ अगर वो लोग टीम स्पिरिट को अच्छे से, अगर वो लोग बॉन्डिंग इंक्लूड होते हैं, तो वो लोग अच्छे से वर्क कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में. और we can also encourage worker to work hard and maintain proper discipline at workplace. The company can implement automation and robotics for doing repetitive tasks. It will free the workers to do more repetitive kind of job, and they can do highly valuable job. And the company can also form joint committee members from management and labor to discuss the each other concern, and a neutral third party can come to a mutually agreeable solution. The company can also provide advanced training so that the workers get more skilled, and it will retain the skilled workers because they will feel valued as companies are training them good skills. I completely agree. What I would like to add here is we need to understand the market competition in the market as well. If we are seeing our competitors are using better technology and their employees are skilled enough, then we can, we are expecting a order of 50 crores. So we can invest money in these things like technological advancement and training our employees to that level of competition we are having. Yes, Deepak, you are right. But here the problem is for the new manager is not very much interacted with their workers. So, firstly, the managers should create a atmospheric, stress-free environment to discuss their worker what type of production. I agree with your points, but I want to share some more point. जो प्रॉफिट जो लाभ है कंपनी का वो कम होने के 2-3 कारण है, जैसे कि आपस में जो कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप होना, दूसरा मैनेजमेंट में सुधार कर सकते हैं, तीसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए एक नए लीडर को हम अपॉइंट करेंगे, तीसरा है कि लोग वर्कर के वेलफेयर के लिए हम अच्छे काम करेंगे, और शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम मैनेजमेंट और वर्कर को दोनों को समझाएंगे, और लॉन्ग टर्म में हम मैनेजमेंट में सुधार कर. So I completely whatever my friends have said, like Ajay have said about declaring deadlines, then Saurabh has said about introducing sports, and what Deepak has said about automation and all. But I want to add few more points. Like first, we can do moral persuasion. Like what we can talk to workers personally, that what they want, what they actually want. We can boost up their morals. Second thing, we can upskill the workforce. Third thing, we can evaluate and improve the processes. Like we can do what we can do. We can feedback loop. We can use the Yes. Yes, Mohit, you are right. Yes, Mohit, you are right. We should have a proper documentation of every worker so that we know that which worker has a capacity, has a specialization in doing the works. So managers should have a documentation of every worker so that he have a proper background of their employee to make the company in a profitable position. Also, we can. The company can hire local manufacturers. Wait, one more point. Also, we can use cross-functional training, like which will introduce more adaptability. What is cross-functional training? That is a worker which is skilled in a particular type of job. We will assign him different kind of jobs so that he can be more versatile, and so that productivity can be increased. The government can also make strict rules and regulations regarding the wages and long working hours. So this will also help, and the media can also play a very important role in raising the issues of labor.
so that the solution can be made. Yes, that And media Karthik, media is external factor, but we are the internal factor of the company. So we should implement our internal rules so that our employee don't leave our company. We should imply a keep single window so that every employee's problem can easily trace and solve so that internal employee cannot surrounding from their place to their place from their work. And second, rule should be same for employee. There should be no any partiality to the workload sharing so that employee cannot leave, cannot complain about their partiality in that. And second, a fair competitive atmosphere between the employee so that employee can feel that they are being paid and they are being work easily because of fair competitors. Everyone have capability so that they are in that position to complete their works. Yes, I agree with your point. I want to get one point. Ajay point employee अगर go one by one. उसके लिए हम उनसे पूछना पड़ेगा कि मतलब सर्वे कराना पड़ेगा उनको कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और हम उनकी शिफ्ट भी कम कर सकते हैं Go one by one, और friends. उनके पक्ष वगैरह बढ़ा सकते हैं ताकि एम्प्लॉय I think one of our fellow mates like Pratik have not spoken till now. Please let him speak. Pratik, if you have any points, you can speak. I have some points regarding the employee retention. So firstly, what we can do is, as we are seeing that there is a production delay and absenteeism occurring between the employees, so we have to find the root cause that why absenteeism is happening. So one of the prominent cause that absenteeism is occurring might be that the company is not providing a proper work-life balance and the attendance policies are too not flexible. So what we can do to improve is that we can make the attendance policies a bit flexible, and also we can keep track of the overtime work which the employee do and reward them accordingly. Further, we can help them by adding health facilities to their family and educational facilities to their children so that they can have some attraction towards our company and not get pushed towards our competitors. That's company can also provide flexible working hours. कंपनी का जो लॉस हुआ है वो अनक्लियर प्रोडक्शन टारगेट की वजह से भी हो रहा है तो हमें उसके लिए भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं. Yes, we should advise the manager that they should have a proper deadline, a proper project duration completion, and have a clear plan to the completion of the project. I think I want to suggest one more point, friends. Here, we can also organize regular meetings between the employee and the manager to give better relation among them, and also we can conclude some seminars for the encouragement of the worker. Basically, we should create friendly atmosphere so that every employee there share their problem so that manager can complete it. Okay. And we should minimize the conflict between management and workers. Right. I think we are expecting a project worth 50 crores. So I think we need to have a proper inventory so that in future, if we get an order like this, then we will not be in a. We are in that position so that we can supply that demand. We can complete. The company can also hire local manufacturers for. I think we should do the second part because there's no time. Like there's very less time left. Yes, I just want to add one more point. The company can hire local manufacturers for reliable supply chain management, and this will also increase production. I want to add one more point. Okay, we are the company policy. We are outsourcing. I'm talking about parts. I want to add raw material. Speak at least one by one. If you are not audible, we all are not audible, and we will not be able to come to the conclusion if we speak like this. It is. As Karthik said that we should hire some parts from the outside, but I think we are in the company, so we very well know that what production we are doing. So if it is necessary, then we'll do. But in regarding, we have no any such kind of necessity to hire product from outside.
regarding to stop the employee leaving the organization, we managers should appreciate individuals for their hard work so that they can work more effectively and efficiently. And also we provide regular breaks to the employee for refreshment. And give some हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर टाइप के अवार्ड्स भी हम दे सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज को और काम you are right. We should conduct a fair, completely some kind of competitive task so that the employee can arrange, can easily mix with each other. So that there is Everyone, and we can also provide health and education facility to their family and children. Yeah. This is welfare for employed workers. Yeah. Because I want to attracts workers for working for our company. And a good incentive, they will leave other company, and we should give some extra wages for their work. If some is doing good, we should promote. हमें उसे some kind of incentive from there. Yes, some kind of incentive for them if they are good in their extra working. So basically, basically we are in that position that all the drawback we have found out that we should make a clear communication with our workers. And second, a rule-based, a deadline-based project date, and a single window for the employees who have facing their shortcoming and their problems, so that they cannot spend time on the documentation. And तो सबसे पहले 4 स्टेप जो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टेप का बोला है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हम एक अरेंज कर सकते हैं और उसको जो भी इवेंट वगैरह है, और सेकंड स्टेप we can connect with the local people, local managers, and some type of bonding between them should be established. Okay, now I'm और हम लोग उसके regarding conclude. the second point is about to will give deadline. Deepak, I'm sorry to interrupt. I am giving you 3 more minutes now to conclude the task. Okay, I have given you 15 minutes. 15 minutes have been completed. I am giving you 3 minutes to the group. Thank you. Okay. Then let me complete. Let me conclude. Right? Okay. So thank you everyone for giving me this opportunity. On behalf of everyone, I am concluding today's group task. So we are given 4 steps to streamline our production. So first 4 steps first 4 steps are: we need to clear the communication gap between employees and management. We will give deadline to employees so that they will give their best 100%. And third point is we will give them that teamwork training as well as skill development programs to enhance their skills. And fourth point is about automation and technological advancement at par with our competitors. And the next question is middle management. Okay, have we I think have we discussed middle management thought? Sir, so we have discussed 4 advices. Yes, we have already discussed about the what. Okay, Deepak, conclude it, please. Okay, so regarding employee leaving, employee leaving problem, we can do is incentive programs, award programs to employees so that they will retain in our company. Along with, we can run employee welfare programs like free education, free health to employees. Also, we will provide extra wage those who are working additionally for the company. Yes, everybody and to the company and to make the workers stay in the company, I think investment in their training can be done so that they feel valued in the company and they will retain in the company. And also they can
be given a flexible working hour option, like if they want to work from home, they should be provided that option also. So this will Yes. also make them happy and they will stay in the company. I Yes, disagree Karthik, with you are right. you, After Karthik. we, Hello. fine. Yes, Karthik, you can speak. What's the disagreement of you? I disagree with you, Karthik, since it is a factory work. So work from home isn't a feasible option, as the workers have to be physically present there in order to complete the task and run the production line. So work from home cannot be an option, but a flexible working But hour it could should be, be possible. yes, it should be only available in the emergency situation. If we have the option for the employee, then we can give one or two employee in that emergency situation. But if the Yes, production line that is, is. I have mentioned that wherever it is possible, I have mentioned that wherever it is possible, work from home can be given and flexible working hours should be Yeah, provided. I also agree with Karthik that wherever it is possible, we can go for work from home. Otherwise, it is factory related task. so if all these things we are implemented, so definitely we will get our new contract that is which is 500 crores. If we implemented all the things, then definitely we will get it. Okay, so yes, sir, we are done. Okay, sir. ओके, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग ना अपना म्यूट कर लो। आपने काफ़ी अच्छा बोला सबने। अच्छा, मैं किसी का देखो नाम मैं ग्रुप पे लेता नहीं हूँ। मैं इशारों में बात कहूँगा, आपको समझना है, ठीक? क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंडिविजुअली मैं रादर एक वैसा फीडबैक दूँ। देखो, एक तो जैसे आप लोग जब बोल रहे हो, ठीक है? और देखो, हर कोई ना बहुत क्लोज है नौकरी पाने के, आपको समझना पड़ेगा। एंड यू हैव टू नाउ ऑलमोस्ट फाइट फॉर दिस, है ना? आई डू नॉट वांट टू से इट, बट ऐसा ही है। वहाँ पे एवरीबॉडी इज गोइंग टू फाइट फॉर दिस वन लार्ज चांस। तो आप जब बोल रहे हो, ऐसा ज़रूर होगा आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। क्योंकि हर किसी को बोलना है। तो आपने ना अपने जेस्चर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मतलब कई बार ना जैसे करके ऐसे हो जाता, मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। कंट्रोल करना है। आई नो इट इज़ नेचुरल, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर ऐसा मुंह बनाए या कैसा ही मुंह बनाए, अल्टीमेटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द चांस टू टॉक, ठीक है? मॉडरेटर जो होगा शायद आपकी बुरी हालत देख के शायद मौका दे दे, बट डू नॉट डिपेंड ऑन हिम कि वो आपको वो बोले कि ठीक है भाई, इसको चांस नहीं मिल रहा है, इसको बोलने दो। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, कभी भी ना जोक ही क्यों ना मार दे कोई, उसमें ना कोई जोक ही क्यों ना मार दे, बी द लास्ट वन टू लाफ। यू सी, इट इज़ इन आवर सीरियस मैटर दैट विल बी गोइंग ऑन देयर। वहाँ पे काफ़ी सीरियस मैटर चल रहा होगा। स्माइल हल्का हो गया कोई बात नहीं, बट बी द लास्ट वन टू शो योर टीथ। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद इसको ऐसे सोचिए कि आप अगर मॉडरेटर बैठे हैं एंड देयर इज़ अ वेरी सीरियस डिस्कशन गोइंग ऑन, पीपल आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट सैक्ड, है ना? क्योंकि अब इन 6-8 लोगों में से 1-2-3 लोग छटने हैं, बाकी 5 नहीं छटने बेचारे। तो बी द लास्ट वन टू लाफ। तब हंस लिए तब थोड़ा सा हाँ बस ठीक है। तीसरा, जैसे कोई किसी को एकदम पॉइंट ब्लैंक पे गलत ठहरा दे, ठीक है? जैसा अभी हमने इस डिस्कशन में भी देखा, पॉइंट ब्लैंक पे किसी ने गलत ठहरा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग भी इसको सोचिएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला, किसी ने मेरी बात को एकदम गलत कह दिया। अब कोई थर्ड बंदा बीच में कूदेगा ना, तो इट डज नॉट लाइक गुड, इट डज नॉट साउंड गुड। जिसको उसने गलत ठहराया, एक मौका उसके पास उसको लेना है, खुद भी लेना अगर नहीं मिल रहा है, कि यार मैं अपने आप को डिफेंड तो करूँ जो मैंने बोला। अगर आप लोगों को लगता है वो नहीं बोल पा रहा है एंड ही इज़ गॉन, तब आप बीच में कूदना। अदरवाइज बिफोर लेटिंग हिम स्पीक, आप जब करोगे ना, ऐसा लगेगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसने कुछ बोला, सामने वाले ने काउंटर किया, एंड यू आर जंपिंग इनटू इन बिटवीन। तीसरा जो है, देखो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि कंक्लूजन कौन कर रहा है, और थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है स्टार्ट कौन कर रहा है। थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा। आप लोगों ने खुद इसमें देखा होगा कई बार। लेकिन देखो, कंक्लूजन करने की जिम्मेदारी तो आपने ले ली, आपने चांस भी ले लिया कंक्लूड करने, लेकिन अगर आप उसको कंक्लूड अच्छे से करेंगे नहीं ना, तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बी वेरी श्योर कि आपने अगर कंक्लूड करना है तो आपने सबको अच्छे से सुना है, और आपके पास बोलने का है उस टाइम।
again it boils down to how much have you read the task. यानी कि जो ग्रुप टास्क जब बोला जाए या दिखाया जाए ना, उसको तो एकदम अपने अंदर समा लेना आप लोगों ने। चौथी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी एक ने ना सजेशन दिया था वर्क फ्रॉम होम। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वर्क फ्रॉम होम सजेशन किसके लिए था? वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स। यस सर। बट सी व्हाट हैपेंस इज दैट कि जनरली जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, हाउएवर इट इज ए मिनिस्क्यूल थिंग टू टॉक अबाउट, बट जनरली जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं ना, ये वो वर्कर्स होते हैं जो थोड़ा सा लेबोरियस काम करते हैं, है ना, मतलब अपने हाथ और पैरों की मदद से वो काम करते हैं। उधर कुछ ऐसा जनरली काम होता नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए, क्योंकि है ना, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उनको तो फिजिकली प्रेजेंट होना ही है। अगर प्लेट में पंचिंग होनी है तो उनको फिजिकली प्रेजेंट होकर ही पंच करना है। घर पे रह के हाउएवर ये बड़ी छोटी सी चीज़ है जो मैं पकड़ रहा हूँ, बट देखना है कि किसको वर्क फ्रॉम होम बोल दिया। लेबर को वर्क फ्रॉम होम बोलेंगे तो बेचारा मतलब वो काम शायद चलेगा नहीं। चौथी बात, यस सर। पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी लोगों के पास ना बहुत अच्छे थे। और जो मोहित ने वो शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आई एम कैटेगोरिकली स्पीकिंग, आपको वो शब्द ऐसे पकड़ने चाहिए। ये ना 3 4 5 शब्द ही होते हैं, मोरल परसुएशन, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, है ना। वो ऐसा लगता है यार क्या सीख क्या हुआ ये बंदा, है कुछ नहीं मोरल परसुएशन, आप उसको बैठा के बस जबान से समझाओगे, बट ऐसा लगता है उसने मोरल परसुएशन बोल दिया तो यार पता नहीं यार, ही इज ए लर्नड पर्सन, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो ये है ना आर्मरी में सुबह भी डिस्कशन हुआ था, 5 6 चीज़ों की वे फॉरवर्ड आपके वो शब्द 5 6 होते हैं, अगर आप कहेंगे आई विल कंपाइल एंड सेंड देम यू टुमारो, ठीक है। और वे फॉरवर्ड के 5 6 शब्द, चैलेंजेस के 5 6 शब्द है ना। चैलेंजेस में जैसे मैंने वीडियो में भी बताया था, अपनी पेस्टल नाम से आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सुना हो कभी। पॉलिटिकल चैलेंज आ सकता है, इकोनॉमिक चैलेंज आ सकता है, सोशल चैलेंज आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, है ना। ये एक ऐसी शब्दावली होती है जो हर जगह फिट हो जाएगी, पर ऐसा लगेगा यार क्या सीख क्या है वो यार, अच्छा यार इतना, ठीक है। और बाकी देखो कार्तिक, आपका इंटरव्यू और जीडी कम है, कल है सॉरी। आई एम कॉन्फिडेंट कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म गुड। मैं आई एम सेइंग इट स्पेसिफिकली टू यू क्योंकि आपका कल है, मुझे ऐसा लगता है। बस कार्तिक यू समहाउ ना, कई बार क्या करना होता है, बिकॉज इट इज़ ए ग्रुप टास्क और हर किसी को बोलना है, तो आपको ना कई बार ना सामने वाले के ख़त्म होने से पहले पिच इन करना पड़ता है। आप वेट करते हो सामने वाला ख़त्म हो तब मैं बोलूँ, वो सामने वाला वेट करता है कोई मेरे को रोके, कोई बीच में बोले तो मैं रुकूँ, अदरवाइज वो नहीं रुकने वाला। आप अजय को बोलो, अजय दो 5 6 तीन मिनट पॉइंट बता। एक साथ बोलने लग रहे हैं तो, मैं मतलब हम्म, वही 2 3 पॉइंट एक साथ बोलने लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ बीच में कट ना करूँ, क्योंकि ऐसा बोला गया बीच में कट करने के भी मार्क्स कटते हैं। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू, बीच में कट करने के मार्क्स कटते हैं, पर मैं इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, वो आपको पता चलना चाहिए ये स्लोप डाउन हो रहा है। एक होता है बीच में कट करना, एक होता है जब वो खत्म होने वाला तब अपने आप को पिच करना। Yes, sir. अगर आप तब पिच नहीं करेंगे ना, वो खत्म होने वाला हो, लेट अस सपोज 80% 85% पे आ गया आपने, तो वो दोबारा जीरो पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको तो मौका मिल रहा है ना बोलने का, उसको तो स्क्रीन टाइम मिल रहा है अपना, अपने आप को शोकेस करने का। तो समहाउ यू विल हैव टू आल्सो डिसाइड व्हेन टू स्टॉप हिम, एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पास पॉइंट्स अच्छे हैं, आप बोलते अच्छा हो, चीज़ों को आप लिसनिंग भी करते हो। कार्तिक को स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कल है ना, मतलब ग्रुप के लिए, सभी के लिए वैसे तो ये चीज़ें ठीक है। तो इंडिविजुअली आपकी परफॉर्मेंस मैं आपको भेज दूंगा, रादर देन यहाँ मैं सबको उसके मार्क्स बताऊं। मैंने एज ए ग्रुप 4 पॉइंट्स ही बताए आप लोग, अभी 10 पॉइंट बताने का भी कोई लॉजिक नहीं है अगर आप कंप्लाई ना कर पाओ। पहली चीज़ तो अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो चेहरे पे और बॉडी लैंग्वेज पे आना नहीं चाहिए, एक काइंड ऑफ डिस्गस्ट की फीलिंग नहीं लानी। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि देखो 15 18 मिनट, मैं यहाँ 15 मिनट दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको 20 मिनट के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है। आप 15 मिनट में अगर अपना समय निकाल रहे हो तो 20 मिनट में तो अपना आप निकालोगे ही। दूसरी चीज़ क्या है, बी द लास्ट वन टू लाफ वाला की है ना, मतलब वहाँ कोई जोक नहीं है, अगर कुछ हो गया तो बी द लास्ट वन। तीसरा, अगर किसी ने आप पे काउंटर ही फेंक दिया, भाला मान लो आपके ऊपर ही फेंक दिया सीधा, तो बीच में जंप नहीं करना किसी और को भाला, तो आप अपना आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और जो मेन जो इसका टास्क का चीज़ है, दैट इज द नेचर ऑफ द टास्क।
फुल अटेंशन से, फुल फोकस से उस लिटरेचर ऑफ द टास्क को आपने समझना है। अगर आपने टास्क समझ लिया, पॉइंट भी जनरेट हो जाएंगे। और आपको 8 मिनट दिए गए हैं अगर पॉइंट जनरेट करने, तो जनरेट एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। आपको बैठना नहीं है, लगे रहना। ये कुछ नहीं फालतू पॉइंट हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको भी पता है लिमिटेड टाइम में आप लोगों को बताया गया है ना, आपको 8 ही मिनट दिए गए हैं। तो यस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड।